Good morning, dear students. We have completed 7 chapter of microeconomics of your syllabus. Today I am going to start first part, statistics for economics, and chapter number 9 of your syllabus. Measures of central tendency, arithmetic mean. Arithmetic mean is the number which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of items. तो जो है अर्थमेटिक मीन का जो है ये डेफिनेशन है और इसका फार्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n कि किसी सीरीज की सभी आइटम की वैल्यूज को उसकी नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं. अर्थमेटिक मीन जो है टू टाइप्स है, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन. टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिंपल अर्थमेटिक मीन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन. 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस. टुडे वी विल डू न्यूमेरिकल्स इन इंडिविजुअल सीरीज और कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन. 3 मेथड है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज मीन्स इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगलली, जैसे मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स और wages of 9 workers, and we will present it in the either in serial number or ascending or descending order. In this example, marks of 10 students are 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 80, 85, 90. The formula is sigma x upon n. To calculate arithmetic mean in individual series is sigma x upon n. Sigma x means total of number of values, item की values को total किया तो आ गया 535 and number of observation are 10. 535 divided by 10, answer 53.5. This will be answer 53.5. Now the calculation of arithmetic mean in individual series by shortcut method. In shortcut method we assume a value from the items. For example, we assume 50 as a assume mean. mid value जो है हम assume करते हैं, d निकालेंगे पहले, x minus a, 20 minus 50, 25 minus 50, minus 30, minus 25, minus 20, 10, 0, 5, 10, 30, 35, 40. Minus, we will add separately minus items and positive items separately, and the total of sigma d will be 35. Now the formula is a plus sigma d upon n. A, what is a? 50, assume me, and sigma d is 35 and number of observation 10. By calculating we will get 53.5. 53.5. Now by step deviation method we will write first of all items 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 80, 85, 90. And the formula is x bar equal to a plus sigma d dash upon n. Okay, first of all we will derive d. We will get x minus a. We will assume middle value is 50, assume mean. Now we will calculate d, x minus a. 20 minus 50,
-30, -25, -20, -10, 0, 5, 10, 30, 35 and 40. Right? Now we will add minus item. No, first of all we will calculate D dash, D upon C. C is the common value which is in the D. माइनस कॉमन वैल्यू कौन सी है नजर आ रही है आपको? 5 जो है C इज कॉमन वैल्यू. कॉमन माइनस डिवाइड करेंगे D को, -6, -5, -4, -2, 0, 1, 2, 5, 6 37, 5, 8. ठीक है. सेम वे माइनस डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे माइनस, तो इसका टोटल C डैश का टोटल आएगा 7. ठीक है. इनटू C, A व्हाट इज A? 50 प्लस 7 अपॉन N 10. कॉमन फैक्टर इज, common factor is 5. By calculating 5 to the 10, 3.5. 50 plus 3.5 equal to 53.5. In the three methods, if we calculate arithmetic by 3 methods, the answer will be same, 53.5, 53.5. This is the calculation of arithmetic mean in individual series. In the next lecture, we will do calculation of arithmetic mean in discrete series. Now the formula is, write down the formula of calculating arithmetic mean in individual series. Direct method is sigma x upon n, summation of x upon n. Shortcut method is a plus sigma d upon n, and d we calculate by x minus a. And step deviation method means we take next step of deviation. Step deviation, deviation का अगला step, deviation का अगला step means d dash. d dash कैसे कैलकुलेट करेंगे? d upon c, a plus sigma d dash upon n into c. This is all for today. Thank you.